So yeah, let's begin chapter 6, that is funding and valuation. Chapter 5 I have covered earlier और वो अच्छा खासा वीडियो बन चुका था, तो मैंने वही प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में से देख लोगे तो चल जाएगा, उसमें लाइन में ही है। नाउ चैप्टर 6 फंडिंग एंड वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं फंडिंग एंड वैल्यूएशन में। अच्छा चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। तो पहला तो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग एंड वेयर टू गेट इन्वेस्टमेंट। पहला तो बेसिक्स क्या है कि फंडिंग कहाँ से लाना है और कहाँ बेसिक्स क्या है और फिर कहाँ से लाएंगे। फिर आ जाता है प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, क्या क्या चीजें हैं। फिर क्वांटिफाइंग द सीड कैपिटल, सीड कैपिटल क्या होता है। फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर द स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। फिर हाउ टू अप्रोच एंजल इन्वेस्टर्स एंड वीसी फर्म्स, एंड लास्ट में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द टर्म शीट, इन्वेस्टर अग्रीमेंट एंड इक्विटी वैल्यूएशन, द साइंस बिहाइंड द स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो सो दिस आर द लर्निंग व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। नोइंग दिस इज इंपॉर्टेंट। को तो आपको दिमाग में एक माइंड मैप बनता रहे कि कहाँ पहुंचे। तो यहाँ पर वही चीज है। So startup funding and where to get funding, prerequisites of funding, steps involved in getting funding, फिर quantifying the seed capital, फिर financial modeling for the startups, approaching angel investors and venture capital funds, and understanding the startup funding elements, जिसमें आ जाता है term sheet, investor agreement and equity dilution, and last में science of valuation. फिर let's move ahead. So securing funding for a startup is a challenging and multifaceted process that requires entrepreneurs to navigate a complex landscape of investors, markets, and competition. While the idea of receiving financial support may seem straightforward, the reality is far from easy. We all know कि भाई ऐसे ही directly कोई funding नहीं कर देता. So entrepreneurs must first develop a compelling business concept that addresses a genuine market need or problem. This entails conducting thorough market research to understand the consumer preferences, industry trends, and the potential competitors. Once the business idea is solidified, entrepreneurs often create a detailed business plan that outlines their vision, target market, revenue model, and the growth story. This document serves as a roadmap for both the entrepreneur and the potential investors, demonstrating the viability and the potential of the venture. तो मतलब ज्ञान दिया है यहाँ तक. So with a business plan in hand, entrepreneurs begin the challenging task of seeking funding. तो फंडिंग लेना शुरू करता है. फंडिंग के लिए outreach process चालू करता है. So this process typically involves identifying and approaching various sources of capital, including VC firms, angel investors, accelerators, and crowdfunding platforms. Each of these funding sources has its own requirements, preferences, and investment criteria, making it essential for the entrepreneurs to tailor the pitches accordingly. पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द फंडिंग प्रोसेस के पिच करना इन्वेस्टर्स को एक बहुत क्रिटिकल स्टेप हो जाता है पूरे फंडिंग प्रोसेस में. सो एंटरप्रेन्योर्स मस्ट इफेक्टिवली communicate their business ideas, showcasing its potential for growth, scalability, and the profitability. This often requires compelling storytelling, persuasive presentation skills, and a deep understanding of the market and the industry dynamics. तो ये सब पूरा का पूरा अपने को इसके साथ चाहिए होता है. पूरा मार्केट अंडरस्टैंडिंग चाहिए या फिर डीप रिसर्च चाहिए होती है कि कैसे वी विल रीच टू द इन्वेस्टर्स. However, even with a compelling pitch and solid business plan, securing funding is far from the guaranteed. Investors face a myriad of investment opportunities and must carefully evaluate each potential investment to mitigate the risks and maximize the returns. तो ये अपने ने पहले भी बात की थी कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है. सो रिस्क रिवॉर्ड का क्या रेशियो है, उस हिसाब से पैसे डालने चाहिए इन्वेस्टर्स को. As such, entrepreneurs must be prepared to answer tough questions, address concerns, and negotiate the terms to secure the funding they need. Beyond the initial funding round, entrepreneurs must also determine their ability to execute their plans and deliver the results. This often involves meeting key milestones, achieving the revenue targets, and continuously iterating and improving their product or service. तो ये यहाँ पे वो बात आ गई. So while funding a startup is not easy, it is possible with meticulous planning, relentless perseverance, and a compelling vision. कि एकदम easy तो नहीं है, but अगर अच्छे से planning करे या फिर एक अच्छा परसिवरेंस. सो आई आई से कि 4 मंथ्स तो कोई भी स्टार्टअप को फंडिंग के लिए लगता ही है. अगर 4 मंथ्स के पहले फटाफट हो गया तो इट्स अ वेरी ग्रेट के वहां से ही यू आर एबल टू गेट थ्रू एंड यू आर एबल टू गो फॉरवर्ड. बट 4 महीने जितना तो समय लगता ही है किसी भी चीज को फंडिंग मिलने के लिए. बाय अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ द फंडिंग प्रोसेस एंड इफेक्टिवली नेविगेटिंग द चैलेंजेस, एंटरप्रेन्योर्स कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सिक्योरिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट दे नीड टू ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज टू द लाइफ. तो फिर ये वही बात आ गई. फिर आ जाता है 6.1 अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग. तो स्टार्टअप फंडिंग में क्या क्या चीजें आनी है. Entrepreneurs seeking fund for the startups may have various purposes in mind, such as launching a new product, scaling operations, expanding into new markets, or bolstering the research and development efforts. It's crucial for the entrepreneurs to have clarity on their funding needs and the objective. कि funding से क्या करना चाहते हैं. Before approaching investors, founders should meticulously craft a detailed financial and business plan outlining their goals, revenue projections, market strategy, and how the funds will be utilized. तो पूरा का पूरा कहाँ जाना है पैसा, कहाँ यूज करेंगे, एंड पूरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होगा. पूरा का पूरा गोल्स क्या है कि भाई ये पैसा कहाँ पे फूकेंगे हम. तो वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलरली एक पूरा का पूरा प्लान आउट होना चाहिए. So this preparation not only demonstrates
professionalism and commitment, but also increases the likelihood of securing investment by instilling confidence in potential investors regarding the startup's vision and the viability. तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ से ये कर लिया तो अभी फंडिंग मिल जाएगी। इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, और वो प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। व्हाई डू स्टार्टअप्स नीड फंडिंग? तो स्टार्टअप्स को फंडिंग क्यों चाहिए? So adequate funding enables entrepreneurs to develop their ideas into viable products or services, conduct market research and build a skill team। तो वही है कि भाई पहला तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मार्केट रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए होगा, या फिर स्किल टीम के दो चार, मतलब समझ लो ना 10 एक चीजें जिसमें पैसा तो यूज होगा, बट वही पैसा यूज करने के लिए तो चाहिए ना, वही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। So without sufficient capital, startups may struggle to navigate the challenges such as product development, market validation, and the initial customer acquisition. Moreover, funding provides a runway for the startups to survive the initial stages where revenue generation may be limited or non-existent। तो भाई जब रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तभी पूरा का पूरा रनवे क्या ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए ये पैसा चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाई अ स्टार्टअप इज रिक्वायर्ड टू रेज द फंडिंग। एडिशनली, having access to the funds allows startup to invest in essential resources like technology, infrastructure, and marketing, which are instrumental in establishing a competitive edge and attracting further investments. Overall, initial funding is vital for the startups to establish a solid footing, fuel growth, and ultimately realize their long-term vision। तो ये वही है कि भाई जो इनिशियल फंडिंग है वो एक सॉलिड फुटिंग है, जिससे ग्रोथ फील हो सकता है, एंड एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए वी कैन वर्क इट आउट। फिर आ जाता है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसमें पैसा यूज़ हो सकता है। तो पहला तो है प्रोटोटाइप क्रिएशन, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ जाता है, फिर टीम हायरिंग आ जाती है, वर्किंग कैपिटल के लिए लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, ऑफिस स्पेसेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस के लिए पैसा रेज़ कर सकते हैं। अब एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रोटोटाइप क्रिएशन? So developing a prototype is crucial for startups to validate the product concept and attract the potential investors or customers। तो ये तो अपने ने प्रोटोटाइप का तो पूरा पढ़ ही लिया। So funding allocated to prototype creation covers expenses related to design, testing and refining the initial product iteration। तो ये जो चीज़ है डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग के लिए जो पैसा चाहिए इनिशियल में, तो वो प्रोटोटाइप क्रिएशन में फंडिंग के थ्रू मिल सकता है। फिर दिस इंक्लूड्स कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रोटोटाइप इटरेशंस, ensuring that the final product meets the quality standards and addresses the user needs effectively। फिर आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है? सो फंडिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट encompasses the entire process of bringing a concept to market ready fruition। It covers expenses such as research and development, design, engineering, and manufacturing। This funding enables the startups to iterate on the product, incorporate the user feedback, enhance the features, and ensure scalability and the market readiness। And last में आ जाता है that investing in the product development is essential for the startups to create innovative solutions, differentiate themselves from the competitors, एंड मीट द इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स इफेक्टिवली। तो सेकंड आ जाता है फंडिंग किस लिए चाहिए? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये अपना हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आ जाता है टीम हायरिंग। तो पैसा किसके लिए चाहिए? हायरिंग द टीम। सो बिल्डिंग टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड टीम इज क्रिटिकल फॉर द स्टार्टअप सक्सेस। फंडिंग अलोकेटेड टू द टीम हायरिंग कवर्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रिक्रूटिंग, सैलरीज, बेनिफिट्स एंड ट्रेनिंग। तो टीम तो चाहिए होगी, टीम के बिना तो देयर इज नो यूज ऑफ गेटिंग एनी प्रोडक्ट। तो टीम तो चाहिए ही होती है। सो रिक्रूटिंग में सैलरीज, बेनिफिट्स एंड ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर दैट्स investing in human capital enables startups to assemble a skilled workforce capable of executing the company's vision, driving the innovation and achieving the strategic objectives। So hiring the right team members early on fosters a positive company culture, enhances the productivity, accelerates the growth, laying a strong foundation for the long-term success। तो हायरिंग में वही चीज है कि भाई एक इट इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस जिसके ऊपर कंपनी का कल्चर और प्रोडक्टिविटी और सब दे कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली। तो ये टीम हायरिंग के लिए पैसा यूज हो सकता है। फिर आ जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं। सो वर्किंग कैपिटल इज एसेंशियल फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ensuring the smooth business operations। Funding allocated to the working capital supports activities such as inventory management, rent, utilities, payroll, and supplier payments। So having adequate working capital enables startups to maintain liquidity, seize the growth opportunities, and whether unexpected challenges of fluctuations in cash flow can be managed effectively। It also provides the flexibility needed to adapt to the changing market conditions and invest in the strategic initiatives that drive the business growth। तो वर्किंग कैपिटल से तो यही चीज होनी है कि वर्किंग कैपिटल अगर रिक्वायरमेंट्स आ गई तो उसके लिए भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है, एंड वर्किंग कैपिटल ही मेजरली तो बिजनेस का एक मेजर बॉटलनेक बन के खड़ा रह जाता है। फिर आ जाता है
लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए भाई लीगल फीस चाहिए या फिर कंसल्टिंग सर्विस चाहिए। So legal and consulting services are indispensable for the startups to navigate the complex regulatory requirements, protect the intellectual property, and access the expert guidance. Funding allocated to the legal and consulting services cover expenses such as legal counseling, compliance fees, intellectual property filing, and the professional advisory service. तो इन चार पांच जगहों पे पैसा डाल सकते हैं फॉर द लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विस, दैट इज लीगल काउंसलिंग, कंप्लायंस फीस जो भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर कुछ फाइलिंग करना है, प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विसेज कुछ है तो। So investing in these services ensures that the startups operate within the boundaries of the law, mitigate the legal risk, and make the informed decisions that support the long-term success and the sustainability of the business. So that's the legal and consulting services. फिर आ जाता है raw material and equipment. Funding allocated to the raw material and equipment is essential for the startups involved in the manufacturing and or product-based industries. तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी है उसके लिए ना रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट का जो फंडिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो इट कवर्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द sourcing of raw materials, purchasing the equipment, and maintaining the production facilities. Investing in quality materials and equipment ensures product consistency, efficiency, and scalability, while also optimizing the production process and reducing the costs per unit. तो अगर रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट में वी आर इन्वेस्टिंग तो एक कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी उससे आ जाती है, बिकॉज इफ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड तो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी भी बढ़ जाती है एंड मार्केट में भी देयर इज अ गुड नेम कि हाँ ये लोग क्वालिटी मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनते हैं. फिर आ जाता है लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन के लिए फंडिंग चाहिए होती है. सो ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन इज क्रिटिकल फॉर द स्टार्टअप्स टू ऑपरेट लीगली एंड गेन द क्रेडिबिलिटी इन their इंडस्ट्री. फंडिंग allocated to licensing and certification covers expenses such as permit fees, regulatory compliance costs, and the certification programs. Investing in obtaining these credentials demonstrates a commitment to the quality, safety, and compliance, instilling the trust and confidence partners partners, and the investors. So that's licenses and certifications. फिर आ जाता है marketing and sales. So funding allocated to the marketing and sales is essential for the startups to build brand awareness, generate the leads, and drive revenue growth. तो marketing यही सबसे मेजरली तो फंडिंग उठाते हैं लोग के, गो टू मार्केट जाना होता है और मार्केटिंग करनी होती है. सो इट कवर्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स पर्सनल, and the promotional campaign. So investing in marketing and sales activities enables startups to attract the customers, communicate the value propositions effectively, and differentiate themselves in the competitive markets. Strategic marketing initiatives helps startups establish a strong market presence, acquire the new customers, and nurture the existing relationships, ultimately driving the business success and profitability. So that's marketing and sales. फिर आ जाता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस के लिए we raise a funding. So establishing a physical workspace and covering admin expenses are essential for the startups to operate efficiently and professionally. Funding allocated to the office space and admin expense covers costs such as rent, यूटिलिटीज, ऑफिस सप्लाइज, इक्विपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल सैलरीज. तो ये ऑफिस स्पेस एंड एडमिन एक्सपेंस के लिए पैसा कहाँ जाता है, तो रेंट में जाता है, यूटिलिटीज में जाता है, ऑफिस सप्लाइज में जाता है, इक्विपमेंट में जाता है, एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल सैलरीज में वो पैसा चला जाता है. सो इन्वेस्टिंग इन अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट fosters collaboration, creativity, and productivity among the team members, while also providing a professional setting for the client meetings and the business operation. तो कोलैबोरेशन, एक अच्छी ऑफिस स्पेस हो तो एक प्रोफेशनल सेटिंग होती है क्लाइंट मीटिंग के लिए, एंड किसी को कोई भी ऑफिस पे आता है तो लगता है कि भाई हाँ कोई अच्छी जगह पे जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ गुड सॉर्ट ऑफ वर्क, तो वहां पे ये चीज आके खड़ी रह जाती है. सो फर्दर हैविंग अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट enables the startups to streamline the operations, focus on the core business activities, and maintain a positive organizational structure conducive to the लॉन्ग टर्म सक्सेस. तो ऑफिस और स्पेस एंड एडमिन एक्सपेंस का ये चीज हो गया ना. टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग की बात करें, सो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग में तीन चीज है. तो पहला तो है इक्विटी फाइनेंसिंग, फिर आ जाता है डेट फाइनेंसिंग, एंड लास्ट में आ जाती है ग्रांट्स. तो ब्रीफ बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है. सो इक्विटी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व सेलिंग अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज इक्विटी इन द रिटर्न ऑफ अ कैपिटल. तो इक्विटी फाइनेंसिंग तो वही होती है कि भाई आपकी कंपनी का एक पार्ट ही आपने सेल कर दिया. फिर डेट फाइनेंसिंग क्या होती है. सो डेट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स बोरोइंग ऑफ मनी एंड पेइंग इट बैक विद इंटरेस्ट. तो लोन लिया और लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना, दैट्स डेट फाइनेंसिंग. और ग्रांट क्या होती है. सो ग्रांट इज एन अवार्ड usually financial given by an entity to a company to facilitate a goal or incentivize the performance. तो ये अपनी grants हो जाती है. फिर आ जाता है नेचर. तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टेड फंड्स. तो इक्विटी फाइनेंसिंग में कोई ऐसा नहीं होता कि भाई हमने जो फंड उठाया वो रीपे करनी होती है. बट डेट फाइनेंसिंग में कैसा होता है, इन्वेस्टेड फंड्स टू बी रीपेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम विद द इंटरेस्ट. और ग्रांट्स में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता कि भाई हमें रीपे करना होता है. तो ये तीन देयर इज अ थ्री गुड वेज ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, एंड ग्रांट्स. फिर ज्यादा रिस्क की बात. सो फाइनेंशियल देयर इज नो गारंटी अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट. स्टार्टअप्स नीड्स टू गिव अप अ पोर्शन ऑफ देयर ओनरशिप टू द शेयर होल्डर्स. और अगर डेट डेट
फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंशियल द लेंडर हैज नो कंट्रोल ओवर द बिजनेसेस ऑपरेशंस स्टार्टअप यू मे नीड टू प्रोवाइड अ बिजनेस असेट एज अ कोलेटरल। तो डेट फाइनेंसिंग में तो कोलेटरल दोगे तो ही इन्होंने लोन मिलेगा ना। एंड ग्रांट्स में तो देयर इज अ रिस्क ऑफ द स्टार्टअप नॉट मीटिंग द गोल और ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच द ग्रांट हैज बीन प्रोवाइडेड। द स्टार्टअप में तो कोई रिस्क ही नहीं है, एज द रिस्क ऑफ द स्टार्टअप नॉट रिसीविंग अ पोर्शन ऑफ द ग्रांट ड्यू टू द सेवरल रीजंस। तो वो एक रिस्क हो जाता है। फिर आ जाता है थ्रेशोल्ड ऑफ द कमिटमेंट। व्हाइल स्टार्टअप्स आर अंडर लेसर प्रेशर टू adhere to a repayment timeline, investors are constantly trying to achieve the growth targets। तो इसमें ग्रोथ टारगेट्स अचीव करने की ज्यादा जिद होती है। अगर डेट फाइनेंसिंग की बात करें तो स्टार्टअप नीड टू कॉन्स्टेंटली adhere to the repayment timeline which results इन मोर एफर्ट्स टू जनरेट कैश फ्लोस टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये डेट फाइनेंसिंग की बात यहाँ पे वो आ गई। एंड ग्रांट्स की बात करें तो ग्रांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ट्रांचेस विद रेफरेंस टू द fulfillment of the corresponding milestone। Thus, a status is constantly thus a status is constantly working to achieve its milestones, the milestones laid down। Now, return to the investor की बात करें तो कैपिटल growth for the investors एंड डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेमेंट्स है और ग्रांट्स में कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं होता, बिकॉज वो तो ग्रांट ही है, इसलिए कोई रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। फिर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस, इक्विटी इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रेफर टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वो तो होना ही, इक्विटी फाइनेंसर्स तो दे विल से गेट दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम बैठेंगे। और डेट फंड में बात करें तो डेट फंड हैज अ वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। और ग्रांट्स की बात करें तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में। सो ग्रांट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। फिर अगर सोर्सेज की बात करें तो कहाँ से उन्हें इक्विटी फाइनेंस मिल सकती है और डेट फाइनेंस और ग्रांट्स कहाँ से मिल सकती है। तो अगर इक्विटी फाइनेंस की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वीसीज है, क्राउड फंडिंग है, इंक्यूबेटर्स है, एक्सेलरेटर्स है। तो यहाँ से यू कैन गेट इक्विटी फाइनेंसिंग। और अगर डेट फाइनेंसिंग की बात करें तो बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट लोन की कोई स्कीम्स है, तो वहाँ से यू कैन गेट डेट फाइनेंसिंग। और अगर ग्रांट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट चैलेंजेस में से मिल सकते हैं, ग्रांट प्रोग्राम्स ऑफ प्राइवेट एंटिटीज। तो यहाँ से आपको ग्रांट्स मिल सकती है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स गेट दैट कैन बी रिसीव्ड बाय द एंटिटी। फिर आ जाता है स्टेजेस एंड सोर्सेज ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। नाउ startups can secure funding from various sources tailored to the specific needs and growth stage। Angel investors, affluent individuals who invest personal funds in exchange for equity, often provide early stage capital, offering mentorship and expertise alongside the financial support। Venture capital firms specialize in funding startups with high growth potential, injecting larger sums of capital in exchange for equity and a role in the strategic decision making। तो पहला तो एंजल इन्वेस्टर होता है जो एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स होता है, जिसको दे हैव उन्होंने फोड़ा है या फिर उनके पास बहुत पैसे पड़े, तो वो लोग डालते हैं। फिर वेंचर कैपिटल्स डालता है कि भाई जिनका काम ही है इक्विटी में पैसा डालना, वेंचर्स में, स्टार्टअप्स में पैसा डालना। सो वो लोग पैसा डालते हैं। फिर आ जाता है एडिशनली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स अलाउ स्टार्टअप्स टू रेज फंड्स फ्रॉम अ लार्ज पूल ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लेवरेजिंग ऑनलाइन कैंपेन्स टू गार्नर सपोर्ट। तो क्राउड फंडिंग भी एक अ गुड वे ऑफ रेजिंग फंड्स आ जाता है। फिर फोर्थ आ जाता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफर नॉन डायलूटिव फंडिंग टू द स्टार्टअप्स, पर्टिकुलरली इन द इनोवेटिव और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है कि जिससे यू कैन रेज मनी एंड उससे यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग फंडिंग रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अलाइनिंग विद स्टार्टअप्स दैट कॉम्प्लीमेंट देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वही चीज आके खड़ी रह गई कि कौन कौन से कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, क्राउड फंडिंग, वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग बोल सकते हैं। नाउ ईच फंडिंग सोर्स हैज इट्स एडवांटेज एंड कंसिडरेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स must carefully evaluate their options to secure the most suitable funding for the startup's needs and goals। तो क्या क्या स्टेजेस है, तो पहला तो आइडिएशन स्टेज है, फिर वैलिडेशन है, फिर अर्ली ट्रैक्शन है, फिर स्केलिंग है, और लास्ट में इतना एग्जिट का ऑप्शन आ जाता है। आइडिएशन आइडिएशन, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन, स्केलिंग एंड एग्जिट ऑप्शंस। तो ये 5 स्टेज है अपने कोई भी स्टार्टअप्स के। फिर अगर आ जाता है तो स्टेज 1 प्री सीड स्टेज। तो सीड राउंड से भी पहला का स्टेज है प्री सीड। सो इन द प्री सीड स्टेज स्टार्टअप्स आर इन द अर्लीस्ट फेजेस ऑफ द जर्नी, ऑफन विद जस्ट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ जस्ट एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चल रहा है। सो फंडिंग एट द स्टेज इज क्रूशियल फॉर कंडक्टिंग इनिशियल मार्केट रिसर्च, डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द बिजनेस। नाउ प्री सीड फंडिंग राउंड्स आर टिपिकली लेड बाय द फाउंडर्स themselves with contributions from friends, families, and early supporters। So there's a saying that startup में तीन ही लोग पैसा डालते हैं, that is friends, families, and fools। तो that's the thing about investing, कि स्टार्टिंग में तो फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल्स ही पैसे डालते हैं कोई भी स्टार्टअप में, एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज।
This initial capital is used to validate the business idea, gather the feedback from the potential customers, and refine the product or service offering. Success in the pre-seed stage sets the stage for further fundraising and progress towards the seed stage. During the pre-seed stage, entrepreneurs are in the process of conceptualizing and initiating their ideas. Typically, the financial requirements are modest at this point. Moreover, avenues for funding are limited and mostly informal during the nascent stages of the startup development. फिर आता था सेल्फ फाइनेंसिंग और बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या है? सो बूटस्ट्रैपिंग इन्वॉल्व्स growing the startup with minimal external investment, relying instead on the personal savings and the generated revenue, कि खुद के सेविंग्स और बिजनेस का जो भी रेवेन्यू हुआ है उससे ही ग्रोथ अचीव करे, तो वही अपना दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग और बूटस्ट्रैपिंग की बात हो जाती है। नाउ दिस अप्रोच इज कॉमनली फेवर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स इनिशियली, एज इट अलाउज देम टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर देयर वेंचर विदाउट द प्रेशर ऑफ रीपेमेंट टू द इन्वेस्टर्स। तो ये अपना हो गया सेल्फ फाइनेंसिंग और बूटस्ट्रैपिंग की बात। फिर आता था सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो एंटरप्रेन्योर्स often turn to friends and families for financial support in the early stages. So the advantage of the funding source lies in the existing trust in the relationship between the entrepreneurs and their investors. तो सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली की यहाँ पे बात हो जाती है। एज आई सेड कि स्टार्टिंग में फ्रेंड्स फैमिली और फूल जी पैसे डालते हैं, एंड दिस इज दैट थिंग। Now, participation in business plan competitions. So, entrepreneurs can also access funds through business plan competitions and pitching events where institutes or organizations offer prize money, grants और other financial benefits. तो ये मिलता है बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में अगर जाता है तब ये सब चीज़ें मिलती है कि भाई ग्रांट्स मिलता है, मनी मिलता है, या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकता है। while the amounts awarded may not be substantial, they are typically sufficient for the idea state startups, के एकदम बहुत बढ़िया भी पैसे नहीं दे देते, बट they are ideal for the they are sufficient for the ideal stage startups. Success in these events hinges on the presenting a well developed business plan. तो सक्सेस तो वहीं पे डिपेंड होती है कि भाई बिजनेस प्लान कैसा है और वो कैसे ग्रो कर रही है चीजें, तो वहीं पे उस पे ही डिपेंड करता है यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेज आता है सीड स्टेज। तो सीड स्टेज में क्या होती है? So in the seed series stage, startups are in the early phases of development, typically with a prototype and minimum viable product. तो प्रोटोटाइप भी होता है एंड एमवीपी रेडी होता है, इन हैंड होता है। So funding at this stage is crucial for validating the business idea, conducting market research, and refining the product or service. Seed funding rounds are often led by angel investors, VC firms, or startup accelerators, providing capital in exchange for the equity. तो seed funding कौन कौन प्रोवाइड करता है? तो इट्स provided by angel investors, VC firms और startup accelerators। ये लोग प्रोवाइड करते हैं seed funding, and which is capital in exchange for the equity. Now startups utilize the seed funding to further develop their product, build the initial traction with the customers, and attract the top talent to their team. तो स्टार्टअप्स वेयर डू दे यूटिलाइज दिस फंडिंग? तो पहला तो है डेवलप देयर प्रोडक्ट, सेकंड बिल्ड इनिशियल ट्रैक्शन विद द कस्टमर्स, एंड थर्ड टू अट्रैक्ट द टैलेंट। तो वही यहीं पे पैसे तो जाने हैं, अपने आगे भी बात की। सो सक्सेस इन द सीड स्टेज सेट्स द फाउंडेशन फॉर द सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड द फंड रेजिंग राउंड्स। At this juncture, the startups engage in field trials, test the product with a select group of potential customers, recruit the mentors, and assemble a formal team. To secure funding, the startups may explore several वेन्यूज। तो क्या क्या एवेन्यूज यहाँ पे दे कैन एक्सप्लोर? तो पहला तो आ जाता है इंक्यूबेटर। सो इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस established to support the entrepreneurs in launching the startups. In addition to providing valuable services such as office spaces, utilities, and admin and legal assistance, incubators may offer grants, debt or equity investments. तो ये लोग क्या डाल सकते हैं? तो इंक्यूबेटर्स क्या देते हैं? सो ग्रांट्स, डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इंक्यूबेटर्स गिव। फिर आ जाता है सेकंड आ जाता है गवर्नमेंट लोन स्कीम्स। सो वेरियस गवर्नमेंट लोन स्कीम्स प्रोवाइड कोलेटरल फ्री डेट टू असिस्ट द aspiring entrepreneurs in accessing the low cost capital. Examples include the startup India seed fund scheme and SIDBI fund of funds। तो ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो दिस इज अ गुड सॉर्ट ऑफ सर्विस दैट VSTAs कैन प्रोवाइड। यहाँ पे यू कैन टेक अराउंड 50 to 60,000 50 to 60K of rupees, and you can apply for the startup India fund scheme, and you can start earning from that. That is government loan schemes। फिर आ जाता है एंजल इन्वेस्टर्स के you can do। So angel investors are individuals who invest in promising startups in exchange for the equity. Startup founders can connect with angel networks such as Indian angel network, Mumbai angels, lead angels, Chennai angels और relevant industrialists। तो ये अपना आ गया एंजल इन्वेस्टर्स की बात। क्राउड फंडिंग की बात करें तो क्राउड फंडिंग इन्वॉल्व्स रेजिंग फंड्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग अ स्मॉल अमाउंट, टिपिकली थ्रू द ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये अपना हो गया क्राउड फंडिंग की बात। फिर आ जाता है सीरीज ए का स्टेज, कि सीरीज ए स्टेज में क्या क्या चीजें होती है। सो इन द सीरीज ए stage, startups have typically proven their concept, demonstrating their initial market traction and revenue growth. Now, this funding is not focusing on scaling operations, expanding the customer base, and further developing the product or service. कि एक बार you know
ये फंडिंग राउंड क्या करता है कि जो ऑपरेशंस को स्केल अप करना है उसके लिए हेल्प करता है, कस्टमर बेस के लिए हेल्प करता है एंड फर्दर डेवलपिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ वेंचर कैपिटल फर्म्स आर प्राइमरी इन्वेस्टर्स इन सीरीज राउंड्स, प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर द इक्विटी। तो वीसी फर्म्स सीरीज राउंड में क्या करता है, सब्सटेंशियल कैपिटल देता है और उसके बदले दे टेक द इक्विटी। सो स्टार्टअप्स यूटिलाइज सीरीज फंडिंग टू सॉलिडिफाई देयर मार्केट पोजीशन, इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स एंड बिल्ड आउट the team and the infrastructure. Success in series of funding rounds is crucial for the startups as it lays the foundation for the future growth and establishes credibility in the eyes of investors and the market. So, Series A की funding का what's the crucial stage के it lays the foundation for the future growth and establishes कि ये एक बार Series A round आ गया ना तो उसके बाद तो there's a high potential of growth that will occur in the startup. Now, startups here seek funds to further expand their user base, enhance the product offerings, and potentially enter the new markets. Common sources of funding utilized by startups at this stage include तो कौन-कौन से कॉमन सोर्सेज ऑफ फंडिंग है इस स्टेज के। सो पहला तो आ जाता है वीसी फंड्स। तो आपने बात की, सो वीसी फंड्स आर प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिंग इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। तो दिस आर द हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स जिसमें वीसी पैसा डालता है। सो ईच वीसी फंड ऑपरेट्स बेस्ड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट थीसिस। तो एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होती है जिसके बेसिस पे एवरी वीसी फंड रन्स इट्स इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड उसके बेसिस पे ही दे रन व्हिच एनकम्पासेस द प्रेफर्ड सेक्टर्स, स्टार्टअप स्टेज एंड फंडिंग अमाउंट। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे आके खड़ी रहती है। सो वीसीज़ टिपिकली एक्वायर इक्विटी इन स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेंटरिंग देयर पोर्टफोलियो कंपनीज। तो वीसीज़ तो दे acquire stakes in the company and they do the same sort of thing and वहीं से they start getting the funding. तो that's the VC funds. फिर आ जाता है banks और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो फॉर्मल डेट फाइनेंसिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज ड्यूरिंग दिस स्टेज, leveraging the startup's market traction and revenue to demonstrate its ability to fulfill the interest payment obligations. Now, this form of funding is particularly relevant for addressing the working capital needs. Some entrepreneurs may favor debt financing over equity as it does not entail the dilution of the equity ownership. तो बैंक्स और एनबीएफसी की बात करें तो फॉर्मल डेट आ जाती है। फिर फॉर्मल डेट मिल सकता है बैंक्स और एनबीएफसी के थ्रू, और वहां पे इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं होती बट दे फेवर डेट फाइनेंसिंग बिकॉज उनको तो इंटरेस्ट चाहिए, उनको क्या डाइल्यूशन स्टेक लेके बैंक क्या करेगी। सो दैट्स बैंक्स एंड एनबीएफसी से यू कैन गेट इट। फिर आ जाता है वेंचर डेट फंड। सो वेंचर डेट फंड आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट प्राइमरीली प्रोवाइड फंडिंग टू द स्टार्टअप्स इन द फॉर्म ऑफ डेट। These funds often complement angel or VC investments, allowing startups to access the additional capital while minimizing the equity dilution. तो वेंचर डेट फंड्स में तो यही होता है कि भाई जो अपना इक्विटी होता है वो डाइल्यूट नहीं होता है, बट दे डाइल्यूट द डेट पार्ट एंड डेट से डेट ही दे कैन यूज द सर्टेन सर्टेन पार्ट ऑफ द सेम, के वो लोग डेट ही देते हैं और डेट का इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं बट प्राइवेटली देते हैं। फिर आ जाता है सीरीज बी सी डी एंड ई स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, सो इन द सीरीज बी सी डी एंड ई स्टेज ऑफ स्टार्टअप फंडिंग कंपनीज हैव टिपिकली मूव्ड बियॉन्ड द अर्ली ग्रोथ फेज and are focused on scaling their operations, expanding into new markets, and solidifying their market position. At this juncture, funding rounds are characterized by larger investment amounts. तो यहाँ पे larger investment amounts आती है aimed at fueling the rapid growth and further consolidating the company's market presence. तो यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंच जाता है ना सीरीज ए के बाद अगर कोई राउंड पे पहुंच जाता है ना, फिर तो इट्स ऑल अबाउट कि कितना और ग्रोथ वी कैन स्टार्ट गेटिंग। तो वहीं से कितना और ग्रोथ वी कैन हैव एंड वो कितना इंक्रीज कर सकता है, तो वहीं पे आके खड़ी रह जाती है चीज़। तो सीरीज बी फंडिंग राउंड ऑफन इन्वॉल्व वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग स्टार्टअप्स विद सिग्निफिकेंट कैपिटल इंजेक्शंस टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड कैपिटलाइज ऑन द इमर्जिंग opportunities. As startups progress to series C, D, and E stages, funding rounds may involve a mix of venture capital, private equity, hedge funds, and strategic investors, each contributing substantial amounts to support the company's continued expansion and investment एंड इनोवेशन एफर्ट्स। कि एक बार स्टार्टअप्स हो जाता है सीडी पे हो जाते हैं, फिर तो कोई भी आके पैसा डालता है, मतलब कोई भी मतलब बड़े बड़े लोग आके पैसा डालते हैं, वेंचर कैपिटल डालता है, प्राइवेट इक्विटी डालती है, हेज फंड्स डालते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स अगर कोई होता है तो वो लोग पैसा डालना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस लेटर स्टेज फंडिंग राउंड्स आर क्रिटिकल फॉर द स्टार्टअप्स एज अ सीक टू अचीव द मार्केट डोमिनेंस, enhance the product offerings and prepare for the potential exits for the public offerings। तो ये लेटर स्टेज जो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे they have achieved a market dominance and product offerings we they start enhancing and
पोटेंशियल एग्जिट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए भी ये दे स्टार्ट गेटिंग रेडी। तो ये यहाँ पे आ जाती है आईपीओ तक ले जाने की जर्नी पूरी, प्री सीड से बी सी डी ई जितने भी स्टेजेस है। सीरीज बी सी डी एंड सो हैपेंस जनरली व्हेन कंपनी हैज बिकम मैसिव इन साइज बट स्टिल वांट्स टू स्टे प्राइवेट, और आईपीओ इज फार ऑफ, कि बी सी डी तो तभी होता है जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट आईपीओ नहीं लेना। सच कंपनी रेज जनरली हाई फंड्स एट multi-million-dollar valuations and likely to have heavy amount of cash requirements either for the acquisition और द बर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्विजिशन और बर्न करने के लिए तो अल्टीमेटली पैसे चाहिए होंगे ना, कि दूसरी कंपनी इसको अक्वायर करे, या फिर पैसा अपना ही जलाते रहो, जिससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का खेल खेलते रहो। So for example, Ola has raised multiple rounds of funds and now soon they are planning to go for an IPO, and typical funding channels employed by startups during this phase includes, तो कौन-कौन से चैनल्स है? तो पहला तो है वीसी फंड्स आ जाता है। सो वेंचर कैपिटल फंड्स पर्टिकुलरली दोज़ टारगेटिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स cater to the later stage startups. It's advisable for the startups to approach these funds once they have established considerable market traction. Sometimes a consortium of VCs may collaborate to fund a startup. तो ये वीसी फंड्स की बात हो गई। फिर आ जाता है प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट फर्म की बात आ जाती है। So while private equity or investment firms traditionally focus on the addition on established companies, there is a recent trend of some of these entities extending funding to the rapidly growing late-stage startups with a proven track record of consistent growth. Private equity firms generally tend to go for the undervalued, so they can get so that they can get some expertise and get proper valuation for this. तो ये प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट फर्म भी पैसा डालते हैं इन सब एंटिटीज में। फिर आ जाता है एग्जिट और स्केल अप, या फिर दिस इज ऑप्शनल, कि भाई एग्जिट करना है, कि भाई प्राइवेट फंडिंग से ही ग्रोथ अचीव करती रहनी है। एग्जिट इन द सेंस ऑफ आईपीओ। नाउ IPO marks a significant milestone in the life cycle of a startups, representing the transition from the private to the public ownership. During this stage, startups offer shares to the public for the first time, listing them on a stock market, listing them on the stock exchanges. IPOs provide startups with access to a broader investor base, increase the liquidity and the ability to raise substantial capital to fuel growth and the expansion initiatives. Additionally, going public enhances the company's visibility and credibility in the market, attracting the potential customers, partners, and the employees. So, going public का क्या करती है कि एक विजिबिलिटी लाती है, क्रेडिबिलिटी लाती है, कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे आर रनिंग द पब्लिक कंपनी, एंड वहाँ से कस्टमर्स, पार्टनर्स और सब एम्प्लॉयज भी दे वांट टू जॉइन द लिमिटेड कंपनीज, एंड वहाँ से ग्रोथ एक सब्सटेंशियल एक अच्छे पोजीशन में ग्रोथ भी जा सकते हैं। सो दिस द एग्जिट स्टेज ऑफ स्टार्टअप्स refers to the point at which the investors realize the returns on the investment. Common exit strategies include mergers and acquisitions, where the startup is acquired by another company, or secondary offerings where existing investors सेल द शेयर्स टू द न्यू इन्वेस्टर्स, के भाई जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने शेयर बेच देती है जो नई कंपनी आती है। दैट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एग्जिट, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। आईपीओ आल्सो सर्व्स एज एक्सिट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स, allowing them to monetize their investments and exit their startup। तो वही है कि आईपीओस भी एक टाइम के बाद इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जहाँ से दे कैन हैव एन एग्जिट, एंड दे कैन हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, कि भाई हाँ अब हमारा जो इतना पैसा बनना था वो बन गया। अगर दे थिंक कि भाई हाँ कंटिन्यू करना और वेल्थ बन सकती है, तो दे कंटिन्यू ऑल्सो। इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि भाई ये कर दिया, आईपीओ आया तो दे सेल इन ऑफर फॉर सेल, बट वो नहीं होता, एंड दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू होल्डिंग देम, एंड फिर ग्रोथ स्टेज वेल्थ बना सकते हैं वहां से भी। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, आईपीओ क्या होती है? सो एन आईपीओ डिनोट्स द मोमेंट व्हेन स्टार्टअप बिकम्स पब्लिकली लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Given the complex and regulatory nature of the public listing process, it is typically pursued by startups with a strong track record of profitability and sustained growth। कि ये चीज तो बहुत लेटेस्ट है कि 5-6 साल के बाद आईपीओ लाओ तो अच्छा है, कि भाई ग्रोथ भी आ रहा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो गई है, तब आईपीओ लाना मेक्स अ प्रॉपर सेंस। तो ये हो गया आईपीओ की बात। फिर आ जाता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सो इन्वेस्टर्स में ऑप्ट टू डाइवर्स देयर पोर्टफोलियो कंपनी इन अनदर एंटिटी इन द मार्केट। Essentially, this involves the amalgamation of two companies, either through the acquisition of one by another or a portion thereof, or through one company being acquired either fully or partially। तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात वही आ जाती है कि भाई मर्जर दो कंपनी मर्ज हो गई, या फिर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर दिया। सो दैट्स द वे ऑफ एग्जिट, दैट्स मर्जिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन।
फिर आ जाता है सेलिंग द शेयर। सो इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू ऑफलोड द इक्विटी और शेयर्स टू द अदर वीसीज और प्राइवेट इक्विटी सोर्स, कि भाई अपने ही शेयर कोई और वीसीज को दे दो हायर वैल्यूएशन पे, एंड दैट्स द सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो ये सेलिंग ऑफ शेयर्स हो गया। फिर आ जाता है बाईबैक्स भी कर सकते हैं। सो स्टार्टअप फाउंडर्स में आल्सो रीपर्चेस शेयर्स फ्रॉम द फंड और द इन्वेस्टर्स विल possess द लिक्विड असेट्स फॉर द परचेज एंड डिजायर टू रीगेन कंट्रोल ऑफ देयर कंपनी, कि भाई बहुत सारा कंट्रोल दे दिया, बट नाउ दे वांट टू रीगेन द कंट्रोल, तब दे कैन गो फॉर द बाईबैक्स टू। फिर आ जाता है 6.2, दैट इज प्री रिक्विजिट्स ऑफ द स्टार्टअप फंडिंग। नाउ, तो प्री रिक्विजिट्स क्या है? तो पहला तो है असेसिंग द नीड फॉर द फंडिंग, असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक, फिर आ जाता है इन्वेस्टर टारगेटिंग, फिर आ जाता है ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, एंड लास्ट आ जाता है टर्म शीट। सो दिस इज व्हाट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियली, एंड यहीं से सब चीजें कन्वर्ज होती है, एंड यहीं से दे कैन मूव फॉरवर्ड. So the entrepreneurs must be willing to put in the effort and have the positions that a successful fundraising round requires. The fundraising process can be broken down into the following steps: the assessing need for funding, assessing the investment readiness, preparation of pitch deck, investor targeting, due diligence by interested investors, and last में term sheet हो जाती है. So this is the stage. Now, assessing the need for the funding, कि funding चाहिए भी कि नहीं, पहले तो वो तो decide करो. So the startup must thoroughly analyze the reasons behind its funding needs and determine its appropriate amount to be raised. It's imperative to establish a milestone driven strategy delineating specific objectives and timelines for the upcoming 2, 4 and 10 years. तो उनको ये दो साल के लिए क्या करना है, 4 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, तो दैट इज अ माइलस्टोन ड्रिवन स्ट्रेटजी। उसके बाद ही वो उस हिसाब से ही जाए तो बेटर स्टेज रहता है। So crafting a meticulous financial forecast is essential, projecting the company's development trajectory over the specified period. The forecast integrates the anticipated sales figure and factors in market dynamics and the economic indicators. Effective planning of expenses such as production cost, prototype development, research and manufacturing is paramount. तो यहाँ से एक्सपेंसेस का प्लान आउट करना, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है, रिसर्च क्या, कहाँ पे कितना पैसा डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा डालोगे, तो वो बहुत important चीज हो जाती है. So this is what it is. Now this consideration serve as a foundation for the startup's decision making regarding the subsequent rounds of investment. By aligning funding requirements with strategic goals and accurately forecasting the financial needs, the startup can optimize its resource allocation and position itself for the sustainable growth and the success in the long term. Generally, for the tech startup, securing funding is essential for the several critical areas of the focus. तो tech startup के लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है. So funding is crucial to fuel the development of innovative products or technologies. This includes investing in research and development, hiring skilled engineers and developers, and acquiring the necessary tools and resources to build and refine the product. तो ये हो जाता है पहला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है. फिर हो जाता है स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो स्टार्टअप्स नीड फंड्स टू स्केल देयर ऑपरेशंस and grow their customer base. This involves expanding infrastructure, optimizing the processes, and investing in the marketing and sales efforts to increase the market penetration and reach the new customers. So scalability and growth के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आके खड़ी रह जाती है कि टेक स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए होता है. फिर आ जाता है टैलेंट एक्विजिशन को, तो सर्विस इंडस्ट्री तो टैलेंट पे ही चलती है, ह्यूमन पे ही चलती है. सो एक्सेस टू फंडिंग एनेबल स्टार्टअप्स टू अट्रैक्ट द टॉप क्लाइंट एंड बिल्ड अ स्किल टीम. Now, this includes hiring experts in technology, product management, marketing, and sales who can contribute to the company's growth and innovation. The talent acquisition, talent, as I said, कि HR सबसे important person होता है, human resource कोई भी कंपनी का सबसे important person हो जाता है. That's the talent acquisition. फिर आ जाता है market expansion. So funding facilitates the expansion of tech startups into new markets or geographical regions. This may involve localization efforts, adapting the products to suit the different markets, and establishing the partnerships or distribution channels to reach a broader ऑडियंस. तो ये हो गया अपना मार्केट एक्सपेंशन की बात की. टेक स्टार्टअप्स को मार्केट एक्सपेंशन के लिए भी फंडिंग चाहिए होती है. फिर आ जाता है सेकंड, असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस. तो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस है कि नहीं, ये भी असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो स्टार्टअप्स मस्ट नॉट ओनली recognize the funding needs but also assess their readiness to secure investments by addressing the criteria that investors prioritize. Recognize the need for funding is crucial for the startups, but equally significant in engaging the readiness to seek investment. Convincing the investors hinges on demonstrating a solid revenue projections and potential returns. Typically, investors seek several key attributes in a prospective startups. तो कौन कौन से key aspects होते हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स. तो पहला तो आ जाता है रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्केट पोजीशन. सो इन्वेस्टर्स आर ड्रॉन टू द स्टार्टअप शोकेसिंग प्रॉमिसिंग रेवेन्यू ग्रोथ एंड अ स्ट्रांग पोजीशन इन द टारगेट मार्केट, कि भाई पोजीशन क्या है और रेवेन्यू ग्रोथ कितना जा रहा है, वो स्ट्रांग होगा तो दे विल इन्वेस्ट. सो डेमोन्स्ट्रेटिंग मार्केट ट्रैक्शन एंड स्केलेबिलिटी enhances the appeal to
द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो ये हो गया रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्केट पोजीशन। फिर आ जाता है फेवरेबल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइज वेंचर्स विद द पोटेंशियल फॉर द अट्रैक्टिव रिटर्न्स। नाउ स्टार्टअप्स मस्ट आर्टिकुलेट अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। तो फेवरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो वो जानने के लिए दे विल डू द का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप में ऐसे नहीं डलता कि भाई मुझे 12% का रिटर्न दे दो, या तो वो तो म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड भी देता है, बट दे वांट 30%, 40%, 50% के अपनी वेल्थ, 100% वेल्थ इंक्रीज हो जाए डायरेक्टली, तो वो वही उनको चाहिए। सो फेवरेबल आरओआई तो चाहिए ही होगा उनको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज टाइम टू ब्रेक इवन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कितने टाइम में we will do the break even and profitability कितना टाइम में आएगी। So investors assess a startup's timeline for achieving profitability and breaking even. So clear financial projection and a viable business model are essential to instill confidence in the potential investors के break even कितना टाइम में होगा और profitability कब तक तक आएगी, तो वो उनको जानना होता है इन्वेस्टर्स को। फिर आ जाता है यूनिकनेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि ये स्टार्टअप यूनिक कितना है। सो स्टार्टअप्स विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज are more likely to attract the investment, highlighting the uniqueness of the product or service and its market differentiation can enhance the investor interest। तो यूनिकनेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है वो जान लो। फिर आ जाता है entrepreneurial vision and the future plan. So investors seek founders with a clear vision for the future and a strategic roadmap for the growth. Articulating a compelling vision and demonstrating the strategic foresight can inspire the investor confidence। तो ये अपना आ गया entrepreneurial vision and future plans क्या है कि भाई क्या करना है और नया 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 बड़ा बड़ा चीज क्या करना है। सो दैट्स अ entrepreneurial vision and the future plans। तो ये हो गया। फिर आ जाता है रिलायबल पैशनेट एंड टैलेंटेड टीम कि भाई टीम तो चाहिए होती है और वो रिलायबल है, पैशनेट है और टैलेंटेड है कि नहीं, वो जानना होता है कोई भी इन्वेस्टर्स को। सो इन्वेस्टर्स प्लेस सिग्निफिकेंट एम्फोसिस ऑन द स्टार्टअप्स टीम सीकिंग इंडिविजुअल्स who are reliable, passionate, and possess the necessary skills and expertise to execute a business plan successfully. A talented and cohesive team enhances the investor trust and the credibility. Now, by aligning with the investor expectation and demonstrating readiness for growth and success, startups can enhance their appeal and increase the chances of securing the funding। तो ये रिलायबल एंड पैशनेट एंड टैलेंटेड टीम है कि नहीं, तो वो भी एक इन्वेस्टर देखता है कि भाई हाँ पैसा डाल रहा हूँ तो टीम तो अच्छी है ना, वो बड़ा बना पाएगी ना। अच्छा, तो दैट्स रिलायबल पैशनेट एंड टैलेंटेड टीम। फिर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक। नाउ फोर्थ स्टेज एज आई सेड प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक। तो अभी तक जितना वी डिस्कस के ये जो 3-4 स्टेप है, बाद में मैं बताता हूँ कि दैट क्या ज्ञान है इसका। नाउ अ पिच डेक इज अ क्रिटिकल टूल फॉर द स्टार्टअप सीकिंग फंडिंग, सर्विंग एज अ विजुअल presentation that succinctly communicates the company's value proposition, business model, market opportunity, and growth strategy to the potential investors। Now the pitch deck typically consists of several key slides। तो ये we have discussed earlier के इंट्रोडक्शन होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, सॉल्यूशन, मार्केट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मॉडल, ट्रैक्शन। तो ये लास्ट वाले में पिच डेक पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स वो हॉल में आ गया था। नाउ टीम होती है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होते हैं, आस्क क्या है, कॉल टू एक्शन एंड वेल क्राफ्टेड पिच डेक इफेक्टिवली कन्वेज द स्टार्टअप स्टोरी एंड वैल्यू प्रपोजन, कैप्चरिंग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ मीनिंगफुल डिस्कशन विद पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये बात अपने लास्ट में कर लेती है कि क्या क्या चीजें होती है। फिर आ जाता है इन्वेस्टर टारगेटिंग। फिर सो each VC firm operates according to an investment thesis, a strategic framework guiding its investment decisions. This thesis outlines the firm's preferred stage of investment, geographical focus, sector emphasis, and unique value proposition. Understanding a firm's investment thesis is crucial for aligning with the potential investors. Now, to assess a firm's thesis, thorough examination of its website, brochures, and fund description is recommended. So, ये चीज को वी हैव मेड इट वेरी सही। मैं बताता हूँ कि क्या किया है इन चीज इस पूरी ये जो पूरी प्रोसेस मैंने जो बताई ना, that we have made a very simplified version of that same। So now targeting the right investors entails researching their investment thesis, reviewing their past investments, and engaging with the successful entrepreneurs who have secured the equity funding. This process aids in identifying the active investors within the target sector. Second, understanding the sector preferences and geographical preferences. Third, determining the average ticket size of the investments. And fourth, evaluating the level of involvement and mentorship provided to the portfolio startups। तो ये प्रोसेस में ये सब चीजें आ जाती है। Now, pitching events presents valuable opportunities for face-to-face interaction with the potential investors. Additionally, sharing the pitch decks with angel networks and VCs via the designated contact email address can facilitate the further engagement. By meticulously researching and understanding investors' investment thesis, startups can tailor their pitches and target the most suitable investors for their growth journey. So, they can target the entire thing
तो ये मैं बताता हूँ कि हमने इसके लिए क्या-क्या चीज़ें बनाई है एंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस स्पेस। नाउ 6th आ जाता है ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। So before selling an equity deal, both angel networks and VCs meticulously conduct due diligence of startups. Now, this comprehensive examination delves into the various aspects, including the startup's historical financial decision, the credentials, and the background of the team members. Such scrutiny serves multiple purposes: to validate the startup's assertions regarding its growth trajectory and market figures, and to enable the investors to uncover any potential objectionable activities in advance. Following a thorough due diligence process, if both parties are satisfied with the findings, फंडिंग एग्रीमेंट से फाइनलाइज ऑन टर्म्स म्यूचुअली, तो डील कैसे होती है, ये बात वहां पे आ जाती है। तो दिस मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द स्टार्टअप एंड इट्स इन्वेस्टर्स, कि जब डील हो जाती है उसके बाद दिस ड्यू डिलिजेंस हैपेंस एंड ये ऐसा माना जाता है कि भाई हाँ, यहाँ से अब दे हैव स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर हैव गॉन have gotten on the same page. Now, successful due diligence instills the confidence in investors, ensuring transparency and trust throughout the investment process. और लास्ट में आ जाती है टर्म शीट। सो टर्म शीट क्या होती है सर? टर्म शीट इज अ नॉन बाइंडिंग लिस्ट ऑफ propositions by a VC firm at the early stage of deal. It summarizes the major points of engagement in the deal between the investing firm or the investor and the startup. A term sheet for ventures VC ट्रांजैक्शन इन इंडिया टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चरल प्रोविजंस। वैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर होता है, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, एंड फाइनली द चेंजेस टू द शेयर कैपिटल। तो वो पूरी चीज यहाँ पे आ जाती है। व्हाइल अ टर्म शीट इज टिपिकली नॉन बाइंडिंग, इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर नेगोशिएटिंग एंड फाइनलाइजिंग द डेफिनेटिव एग्रीमेंट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्टीज टू रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग विद द ट्रांजेक्शन, कि दोनों को जान लेना चाहिए कि क्या बना रहे हैं एंड क्या हो सकती है। नाउ जो मैंने बताया कि भाई हम लोग इस स्पेस में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक जितना मैंने बताया कि ये जो 6-7 जो जितने भी स्टेप्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं नाउ। So what we have done is created an entire startup fundraising infrastructure where we help startups become investor ready and reach the right investors. अब fundraising relevant क्यों हो चुकी है? Because it have become online and it have become organized. तो दो चीज हो चुकी है कि भाई पहला तो ऑनलाइन हो चुका है एंड सेकंड ऑर्गेनाइज हो चुकी है चीजें। फिर अगर बात करें हाउ इट हैव बिकम ऑनलाइन, तो पोस्ट कोविड तो सब मीटिंग्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जूम में, जी मीट और टीम्स पे ही होती है। सो सब मीटिंग्स वहीं पे होती है। सो इट ऐसे इट हैव बिकम ऑनलाइन। नाउ अगर बात करें तो हैव बिकम ऑर्गेनाइज कैसे? तो ऑर्गेनाइज जैसे अपने ने बात की थी, ये फॉर्मेट बात का बहुत सॉर्टेड हो चुका है कि पिच डे होती है, डीप डाइव कॉल होती है, सॉफ्ट कमिटमेंट होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, मनी ट्रांसफर होता है। सो ये दिस वी टॉक्ड आउट। तो मैं बताता हूँ कि कहाँ वी टॉक्ड इट आउट। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे सॉर्टेड हो चुकी है। नाउ अगर देखें तो यहाँ पे अपने ने बात की कि भाई इन्वेस्टर टारगेटिंग के बाद ड्यू डिलिजेंस सॉर्टेड है, टर्म शीट फाइल होती है, फंड्स ट्रांसफर होता है। सो ये दो स्टेप वहाँ पे कवर हो गए जो अभी तक अपने ने पढ़ा वहाँ पे। तो ये यहाँ तक हो गया। सो यहाँ पे पहुंचाने तक का अब देयर इज अ थिंग। तो ये यहाँ तक पहुंचाने की क्या चीज़ है? तो पहला तो है नीड फॉर फंडिंग, असेसिंग इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक एंड इन्वेस्टर टारगेटिंग। तो ये 4 स्टेप होंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, स्टार्टअप फंडरेजिंग हैपेंस इन 2 स्ट्रक्चर फेजेस। तो ये जो 4 फेजेस थे उसको हमने 2 फेज में डिवाइड कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, इन्वेस्टर आउटरीच। नाउ 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल टू रेज फंडिंग बिकॉज दे इधर लैक इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, या तो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस नहीं होती, या तो क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होती कि इन्वेस्टर आउटरीच करे कैसे। सो दिस इज द टू वेज जहाँ पे 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल टू रेज द फंडिंग। सो उसके लिए क्या किया? सो वी हैव क्रिएटेड द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस सर्विसेज एंड सेकंड है वी हैव क्रिएटेड द इन्वेस्टर आउटरीच सर्विस। तो अब इन्वेस्टमेंट रेडीनेस में अपन ने जैसे बात की, तो असेस द नीड फॉर फंडिंग। तो जब फंडिंग ये तो क्लाइंट आता है तब वी बात करते हैं, तब पता चल जाता है कि उसको फंड चाहिए, तभी अपने पास आता है। तो ये स्टेप तो डन हो जाता है। फिर आ जाता है असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस। तो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस में क्या-क्या चीज़ें आ जाती है? तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन जो डीपीआईडी का होता है, जो अपन ने पढ़ लिया। फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, तो वो अपन पढ़ेंगे। एंड लास्ट में आ जाता है इन्वेस्टर रेडी पिच डेक। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, फिर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे कवर्ड हो गए अपने इन्वेस्टमेंट रेडीनेस में। सो दिस इज़ व्हाट वी प्रोवाइड। अब अगर पैसे की बात करें तो सर्विस की बात करें, ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है। ये ऐसी गुड 1.5 लाख जितनी सर्विस है ये पूरी की पूरी। तो यू कैन अर्न अ गुड सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम दिस। नाउ अगर इन्वेस्टर आउटरीच की बात करें, सो
इन्वेस्टर आउटरीच में क्या है, बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर एनी स्टार्टअप क्या है कि 90% तो फंड रेजिंग ही प्रॉब्लम है, एंड 10% कंप्लायंस, मेंटरशिप एंड कंपटीशन का प्रॉब्लम है। एंड अगर सिनेरियो की बात करें तो फाउंडर हिमसेल्फ लीड्स द फंड रेजिंग, तो पहला तो दे कैन टेक द लो कॉस्ट लिस्ट, या फिर दे कैन टेक द ओवर प्राइस डेटाबेस। तो लो कॉस्ट लिस्ट 5,000 से 2,000 की आती है, और ओवर प्राइस डेटाबेस 2.5-3 लाख का रुपए का आता है। सो दिस इज अ मेजर चैलेंज दैट अकर्ड, एंड इसको सॉल्व करने के लिए वी मेड द आइकोमैच। तो आइकोमैच क्या है, इट्स लाइक अ fundraising execution engine, that is a AI powered fundraising infrastructure। वहाँ पे we have created the whole database जहाँ से sort of AI matchmaking होती है, and you can directly send the personalized bulk emails from here only। So that's the thing of iCommerce। And what are the expected outcomes? तो पहला तो है reach relevant investors faster, increase the probability of investor meetings, and you can save the huge cost of involved in fundraising journey। तो we have created this iCommerce for this the whole domain, जो मैंने बताया ना कि ये पूरी जो प्री-रिक्विजिट ऑफ फंडिंग है उसके लिए ही ये दो तो आपने पढ़ लिया कि भाई वो तो बाद में ही होना है, ये तो क्लाइंट ही लेके आता है कि भाई हम कर रहे हैं। So what we can do is this three, or is three ko we to cater that, we have done this sort of software making, and we have done this. That's what we have been making, and we have made this entire thing of for the funding, for the startups, and for the professionals। तीन चीज बता दो, तीन चीज में ही खेल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट्स द थिंग्स दैट वी कैन डू फर्दर। आगे पढ़ते हैं, चलो। Now let's move forward, that is quantifying the seed capital। So seed capital is a critical aspect for the startups embarking at their entrepreneurial journey. Quantifying the seed capital is strategic and iterative process that requires careful planning and budgeting and resource allocation. Startups should spend time accurately assessing the financial needs, exploring the diverse funding sources, and setting the achievable milestones to effectively navigate the seed phase, and the position themselves for the long-term success in the competitive startup ecosystem. Seed capital represents the initial funds required to kickstart operations, develop the prototypes, conduct market, and lay the foundation. So quantifying seed capital involves meticulously assessing the startup's financial needs and allocating the resources effectively to key milestones। तो ये वही ज्ञान है पूरा जो अपन ने पढ़ा। सो Firstly, startups must evaluate their immediate financial requirements based on various factors such as business model, industry, market size, and competitive landscape. This involves identifying the essential costs associated with the product development, market validation, legal and admin expense, and initial marketing efforts. Secondly, the startup should develop a comprehensive budget that outlines the specific expenses and funding requirements for each stage of the seed phase. This budget requires a roadmap for allocating the resources and ensures that funds are utilized efficiently to achieve the strategic objectives. In quantifying the seed capital, startups must also consider potential sources of funding available to them. This may include personal saving, contributions from friends and family, angel investors, VC firms, crowdfunding platforms, and government grants or the startup accelerators। तो वो सब भी उनको देखना पड़ता है। Now, each funding source has its advantage and considerations, and startups must carefully evaluate their options based on factors such as dilution of equity, investor expectation, and the funding timelines. Furthermore, the startups must factor in the contingency planning and risk mitigation strategies when quantifying the seed capital. This involves identifying the potential risks and uncertainties that may impact the startup's financial health and developing the strategies to address them effectively. By building a buffer for unforeseen expenses and challenges, startups can safeguard their operation and maintain the financial stability during the seed phase. Now, quantifying the seed capital also requires startups to establish clear and measurable milestones that serve as benchmarks for the progress and success. These milestones may include product development milestones, customer acquisition targets, revenue projections, and key performance indicators क्या क्या हो सकता है। So, by setting the tangible goals, startups can track the progress, demonstrate the traction to the investors, and secure the additional funding as needed to fuel the further growth. Now, what are the ways to quantifying the seed capital? So, there are several ways to quantifying the seed capital, which depends on the entrepreneur to entrepreneur, and can be really creative as well as technical based on how confident the startup is about the future। Some of the general ways are कि क्या क्या ways है that uh, we can quantify the seed capital। तो पहला तो है cost based approach। So start by identifying all the expenses associated with launching and operating the startup। This include the costs such as product development, marketing, legal fees, salaries for founders and early employees, office space, equipment, and overhead expense। तो ये हो जाता है cost based approach। By estimating this cost, startups can arrive at a rough figure for the seed capital needs। क्या पहला तो cost based approach है कि भाई हमारी कितनी cost होगी, उसका उतना ही हम funding लेते हैं। So that's a cost based approach। फिर आ जाता है milestone based approach। So break down the startup's development roadmap into
key milestones such as completing the product development, acquiring the first customers, reaching revenue targets, or achieving the specific traction metrics. Estimate the funding required to reach each milestone and aggregate these amounts to determine the total seed capital needed. In larger R&D projects, startups tend to give milestones rather than the timelines to achieve something. There may be complex solutions of engineering or medical which cannot be called a solution till it's proven, which may take months or years. To assess such startups, one must need to adopt milestone-based valuation, which shows progress of the product. A milestone-based approach be, they can use for valuing the startup. Where other than market analysis, conduct the market research to understand the competitive landscape, customer needs, and the potential market size. Based on this analysis, estimate the amount of funding required to penetrate the market, acquire the customers, and establish a foothold in the industry. तो मार्केट एनालिसिस क्या है? तो कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड तो मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है, या फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, कस्टमर नीड्स क्या है, या फिर पोटेंशियल मार्केट साइज क्या है, तो वो अपना आ जाता है market analysis. So based on this analysis, estimate the amount of funding required to penetrate the market, acquire the customers, and establish a foothold in the industry. So that's market analysis. फिर आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सो डेवलप अ डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दैट फोरकास्ट द स्टार्टअप्स रेवेन्यू एक्सपेंशन एंड कैश फ्लो ओवर अ सर्टेन पीरियड टिपिकली द फर्स्ट 12 to 24 months. This projection should take into account factors such as sales forecast, pricing strategies, customer acquisition cost and operational expenses. तो ये सब चीजें भी projections में आ जानी चाहिए. So by analyzing this projection, startups can determine their funding requirements to sustain the operations until they achieve the profitability or secure the additional funding. तो पूरा का पूरा जो financial projections है वो भी इसमें डाल दो. फिर आ जाता है सिनारियो एनालिसिस. तो सिनारियो एनालिसिस करो. So consider different scenarios and potential outcomes to assess the startup's financial needs under the various circumstances. This may involve creating the best case, worst case, and most likely scenarios to account for the uncertainties and risk. By quantifying the seed capital needs across different scenarios, startups can develop a more robust funding strategy and contingency plan. तो worst case, best case और good stage scenario क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मैप आउट कर लो पूरा सिनारियो एनालिसिस करते वक्त. फिर आ जाता है प्रोफेशनल एडवाइस. सो सीक गाइडेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स who can provide valuable insights and assistance in quantifying the seed capital. These professionals can offer expertise in financial planning, valuation, and fundraising strategies, helping startups accurately assess their funding needs and develop a solid financial plan. तो ये प्रोफेशनल एडवाइस अपने सीएस के थ्रू ही ये लोग लेते हैं एंड वी कैन प्रोवाइड अ गुड सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी टू देम. फिर आ जाता है तो क्या क्या चीज़ है, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है, माइलस्टोन बेस्ड अप्रोच है, मार्केट एनालिसिस है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, सिनारियो एनालिसिस कर लो, प्रोफेशनल एडवाइस ले लो. फिर आ जाता है फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिक्स फॉर द स्टार्टअप्स. अब कितना हुआ है उसके बेसिस पे वी डिटरमाइन के इसी वीडियो में कंटिन्यू करना है कि नहीं. आह गुड 100 स्लाइड्स हुई है ना, तो और 100 स्लाइड्स है मे बी. सो या लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो ये पूरा एक सॉर्टेड वीडियो हो गया जिसमें वी डिड द एंटायर इन्वेस्टमेंट रेडीनेस एंड इन्वेस्टर आउटरीच पार्ट. उसके बाद का जितना भी है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. 55 मिनट्स हो चुके हैं एंड वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कंप्लीट इट शायद और 55 मिनट जितना लगे और वन आवर जितना लगे एंड वी वुड बी एबल टू फिनिश दिस ऑफ. या. So that's me. See you, Pratham Magadala, signing off. Thank you. Bye bye.